Good morning everyone. So as you can see that today I am going to give you a video from the chapter articles. So today we are going to read the chapter articles through this video. Before this I have already conducted a live class and there we have already discussed about this chapter. So let us know what are articles. What are articles? A and the are called articles. Basically articles are demonstrative adjective जो कि क्या करता है, they are used before noun and qualify noun. वो noun के पहले बैठता है और noun के बारे में कुछ बताता है. See some examples. A book, a pen, an apple, the Ganga, the Times of India. So book is a common noun. Pen is also a common noun. Apple is also a common noun. Here Ganga is a name of a particular river. The Times of India. This is also a name of a famous newspaper. And before all these nouns, we have used different articles. Now see the definition of article. An article is a word that modifies or describes the noun. So, an article is a word that modifies or describes the noun. It is used before the noun, as I have already told, to show whether it refers to a something specific or not. So, now the types of article. There are two types of article. Definite article, that is the, and indefinite article. Indefinite articles are a and an. Indefinite articles are a and an. And definite articles are, definite article is the. Now let us know the difference between definite article and the indefinite article. Definite means to be clear, exact or obvious about something. So definite मतलब ये होता है कि जिसको पढ़ने से कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, कोई निश्चित, कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम लोग को पता चलता है. एंड इफ थ्रू द इंडेफिनेट आर्टिकल वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. Now see some other differences also. So as I have already told, a and an are known as indefinite article and the is known as definite article. So through a and an, we can understand, see, a and an is used for objects that are not specific or one of several things of a similar type. So by reading this, we can understand that used for objects that are not specific, जो कि बिल्कुल भी specific नहीं है. A and an हम लोग वहीं यूज़ करेंगे when the subject or the object about which we are talking is not very specific, जो कि specific नहीं है, और one of several things of similar type, और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वैसा चीज़ बहुत सारा अवेलेबल हो सकता है. कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. जब हम लोग ए एंड एन कोई भी नाउन के पहले लगा रहे हैं, देन द नाउन इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक. जस्ट रीड द सेंटेंस, आई नीड अ फोन. So here phone is the noun and before phone I have added the article a. Why I have added a? Because the phone is not very specific. If I have said that I need the phone that you have, हमको वही फ़ोन चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा जो फ़ोन है वो बहुत ही स्पेसिफिक है ना, वो एक निश्चित है कि हाँ तुम्हारे पास जो है वही चाहिए हमको. बट हियर आई एम सेइंग आई नीड अ फ़ोन, मतलब हमको एक फ़ोन चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो सकता है ना. मार्केट में जितना भी फ़ोन्स अवेलेबल है इसमें सारा आ जाता है कि कोई भी तरह का फ़ोन चलेगा. बट इफ़ आई से दैट आई नीड द फ़ोन दैट माई ब्रदर हैज़,
तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मेरे भाई के पास जो फ़ोन है हमको वही फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया ना, दैट्स वाई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस दैट आई नीड द फोन दैट माई ब्रदर हैज़, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आई नीड द फोन बोल रहे हैं, हम अ फोन नहीं बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? See here the next. Used the first time we introduce an object. When we are introducing an object for the first time, there also we should use a and and. Suppose, like here, the example is written. I saw a movie last night. I saw a movie last night. हम कल एक मूवी देखें. Here the movie is not specific. ठीक है, कौन सा मूवी देखें, क्या मूवी देखें, ये स्पेसिफिक नहीं है, बस एक मूवी देखें. सो हियर मूवी इज नाउन एंड बिफोर द नाउन अ इज ओनली written. Okay, so when we are talking about any kind of object for the first time, there we supposed to use a and an. Now see, now read about the definite article. Use for specific objects that both the speaker and the listener know. Understand? जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के बात करेंगे, कि मान लो कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ओके, नाउ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, ओके, दैट आई नीड द बुक दैट यू हैव. सो वो बुक के बारे में हमको भी पता है, आपको भी पता है. सो देयर वी कैन यूज द. सी द एग्जाम्पल. Can you give me the books on the table? So there is a table and you know that there are some books. I also know that there are some books. So when we are talking about any kind of object that the speaker and the listener both know, then there we can use the. See the next. Used when we mention the object again. So here, while using a and an, I have already told that when we are talking about any kind of object for the first time, there we can use a and an. But when we will use about the object for the second time, there we can use the. Suppose here I have written I saw a movie last night. कल हम एक movie देखे हैं. The movie is based on real life incident. So suppose this is the first line, that I saw a movie last night. Then again, when I am talking about the same movie for the second time, there I have used the before the movie, because here already हम आपको बता चुके हैं कि कल हम एक मूवी देखे हैं. देखो हम क्या बोले, कल हम एक मूवी देखे हैं, एक कोई सा भी मूवी देखे हैं. नाउ जब सेकेंड टाइम हम उस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आई एम सेइंग दैट द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट. वो मूवी, देखो वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वो मूवी जो हम कल देखे हैं. अंडरस्टूड? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी फॉर द सेकेंड टाइम, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर द. Used as synonyms for the number 1. They bought a computer. Used as synonym for the number 1 means when we have any object only one, then there we can use a or an. They bought a computer. वो लोग एक कंप्यूटर खरीदा. So एक ही कंप्यूटर खरीदा. Okay, so when we have any kind of object only one, then there we can use a or an. Used before plural countries or other plural regions and bodies of water. So कोई भी plural country और other plural region के पहले भी the use होता है. Here we are not supposed to use a or an before any kind of plural object. They used to indicate one of a group. So here to indicate one of a group also we can use a or an. Here used before certain adjectives to give a plural meaning. So the we can use before any kind of adjective to give a plural
Meaning, what do you mean by the rich? Rich is adjective and before rich we have used the rich मतलब वो एक certain टाइप के बारे में बता रहा है, ठीक है. द रिच वो जो कि बहुत पैसे वाले हैं, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. अंडरस्टूड. Now come to the next slide, that where to use a and where to use an. A is used in front of singular countable nouns, a person, animal or thing which are not specific. As I have already told that a or an we are not supposed to use before any specific object. So a is used in front of singular countable nouns and is also used with singular countable nouns. Countable nouns means the nouns that we are able to count. A और an कोई भी uncountable noun के पहले नहीं बैठता है. Okay, they are used with singular countable nouns. We don't use a before uncountable or plural nouns. So I have already told that we are not supposed to use a or an before any uncountable or plural nouns. If a noun starts with a consonant sound, a comes before the noun. So we all know that except a, e, I, o, u, all the alphabets of English are known as consonants. So if any noun starts with a consonant sound, I am not telling consonant letter, I am telling consonant sound, then there we can use a. Like suppose a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, a table. So these nouns start with a consonant sound and that's why before them we have used a. Now see an, where to use an. So a is used with consonant sound and an is used with a vowel sound. If any noun starts with the vowel sound, there before the noun we have to use an. Like an apple, an egg, an ant, an orange, an hour. I am not saying hour. See here the noun starts with a consonant letter, but it starts with a vowel sound. I am not telling an hour. Yes, here H is silent and we are telling R. An R. R है ना पहले. So this is vowel sound. So this word or this word also starts with a vowel sound and that's why we have used an. And old man, an uncle. Okay. So now let's just summarize where to use a and where to use an, and then we will read about the. We use a before a countable in the singular number beginning with a consonant sound. As I have already told, a is used before any countable in the singular number with a consonant sound. Like a song. We use an before a countable in the singular number beginning with a vowel sound. An apple, an egg, an orange. Now see, this part is very important and you all have to wait. Okay, this part is very important and you all have to understand it very nicely. We have not said words beginning with a consonant or vowel. I have not said कि जो word consonant से start होगा या फिर vowel से start होगा. I am telling consonant sound and vowel sound. We have said words beginning with a consonant sound or a vowel sound. So if a word begins with a vowel but not a vowel sound, we use a before it. ठीक है. अगर कोई भी वर्ड वावल से तो स्टार्ट हो रहा है
लेकिन उसका साउंड जो है वो वावल साउंड नहीं आ रहा, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन में वावल साउंड नहीं आ रहा है, देन देयर उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे. सी द एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल, अ यूरोपियन. So as you can see here the word European, here the word European starts with E and E is a vowel, but the sound is U, Y double O, European, a European, a European. तो देखो यो वाई डबल ओ, वाई इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, अंडरस्टूड. So that's why before European we have used what? That's why before European we have used a only. Okay, not an, because from the word European vowel sound is not coming. Okay, it sounds like yo, y double o, European. Here next, one-eyed man. I am not telling one I am not telling, I am telling what is the pronunciation. One-eyed, wa, w का sound आ रहा है ना, and w is consonant. Okay, if I say, see again I am giving example. uh, Suppose this word starts with o, owl, and this word also starts with o, one. See the difference between the pronunciation of both the words. Here one, wa, one, 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 w आ रहा है, and here owl, owl, a आ रहा है ना, देखो vowel sound आ रहा है ना. So that's why before owl we will always use an. And if any word starts with o and the pronunciation comes of any consonant like w, one, one, then there we have to use a university, university. Again this word starts with u, u is a vowel, but the sound comes of yo, y double o, yo, university, university. So that's why we have used a. Same again I am giving another example. Same umbrella. ओके, दिस वर्ड ऑल्सो स्टार्ट्स विथ यू. ये वर्ड भी देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, एंड हियर द वर्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो स्टार्ट्स विथ ए ओनली, सॉरी यू ओनली. ओके, बट सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस. Let me write again umbrella. Okay, now see the difference. This word is also starts with U and this one also starts with U. Now see the difference of pronunciation. University, university. Now pronounce this umbrella, umbrella. I am not saying umbrella, umbrella. No, this is not the correct pronunciation. Umbrella, this is umbrella, a आ रहा है ना. So that's why before umbrella we will always use an, not a. And here a university, university. So that's why we have used a. Understood? Now see some other words which begin with a vowel but take a with them. They are uniform, unit, useful. See. Now read this again. Some other words which begin with a vowel but take a with them. Uniform, unit, useful. जैसा university था वैसे देखो uniform, unit, useful. So that's why we always write a before them. Now, if some words begin with an unsounded H, they also take an with them. कोई भी वर्ड अगर एच से स्टार्ट हो रहा है और एच का साउंड साइलेंट है, लाइक ऑनेस्ट, लाइक आर, लाइक ऑनरेबल,
सो देखो ये सारा वर्ड्स एच से स्टार्ट है बट एच साइलेंट है. आई एम नॉट सेइंग हॉनरेबल. Honorable is not the correct pronunciation. It is honorable. Honorable. This is honest, not honest. Understood? This is R, not har, because H is silent. So अगर कोई भी वर्ड H से स्टार्ट होता है और H वहाँ पे साइलेंट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन में H साइलेंट होता है, so there also we have to use an. Some Now see the use of the. Now where to use the? We use the in front of all the nouns. It doesn't matter whether the nouns are singular or plural or countable or uncountable. ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है. कोई मैटर नहीं करता है. टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन स्पेसिफिक और यूनिक, कोई भी चीज़ को स्पेसिफिकली बताने के लिए we have to use the article the definite article the. Some examples are there. The earth, अर्थ एक ही है ना. अर्थ अगर बोलते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है ये. द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द सन. So to for telling something specific, we have to use the article the. Now see some other uh, parts also where we can use the. We use the before a noun when we want to make it particular. कोई भी noun के पहले हम लोग the लगाएंगे जब उस noun को हम लोग particularly बताना चाह रहे हैं. I have read the book you are talking of. I have read the book that you are talking of. हम उस book के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ. तुम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हो हम वो बुक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक, नॉट एनी बुक बट द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ. अंडरस्टूड. लेट अस वॉक टूवर्ड्स द फ्रंट गेट. कौन सा गेट? फ्रंट गेट है ना. ये स्पेसिफिक है, कोई भी गेट नहीं. कौन सा गेट में हम लोग को जाना है? फ्रंट गेट में. अंडरस्टूड. Now with superlative degrees also we always use the article the, like the sweetest song, the most intelligent student, like this, the wisest king. With a common noun when that noun represents the whole class. देखो dog and elephant, they both are here refers common noun है और इसके बारे में हम लोग द लगा रहे हैं क्योंकि पूरा जो डॉग प्रजाति है, पूरा जो एलिफेंट प्रजाति है उसके बारे में here we are talking and that's why we have used the before both the nouns. Now with such nouns as earth, moon, sun, sky, etc. These things are the only ones of their kind. Sky एक ही है, earth एक ही है, moon एक ही है, sun एक ही है. And that's why before these nouns we can always use the. With the names of rivers, rivers के नाम से पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं द गंगा, द महानदी, द कावेरी, द यमुना. शीज एंड ओशन, सीज एंड ओशन से पहले भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन. यू ऑल हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स. ओके. द माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द आल्प्स. होली बुक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स ऑल्सो वी कैन यूज the Bible, the Mahabharata, the Ramayana. And before the names of trains, ships, aeroplanes also we can use the Taj Express, the Kanishka, like this. Before the names of newspaper also we can use the Indian Express, the Hindu, the Times of India. Well-known buildings, before the name of any well-known buildings also we can use the Taj, the Gateway of India. Countries, if the name contains a common noun, the United States of America, the United Kingdom. Okay.
द डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शन से पहले द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट वी कैन use. Understood? So if you have any kind of problem regarding this chapter, you may ask, and I will give you some questions also. After watching this video, you have to solve the questions and be ready for live class, short live class.